Good morning, all of you. So we meet today for a wonderful session on psychometry test, a blueprint to your career. Right. So taking decision about careers becomes difficult, correct? So correct, matlab in the sense like you can say it is a little confusing, and since now many options are available, plenty of options. So the confusion is more, the confusion is not less. Like if you track back 25, 30, 40 years back, then the options were very limited. बहुत कम ऑप्शंस हुआ करता था, तो उसके कारण कंफ्यूजन कम रहता था, या मतलब पीपल से ए बी सी या तो आर्ट्स या साइंस कॉमर्स एक चूज कर लिया, went ahead and the program gets over. But now it is not the case. Now the options are huge. मतलब बोलते हैं ना अनलिमिटेड, आई कैन से अनलिमिटेड. आप गूगल में जाके सर्च करो, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है. कमी है तो उस चीज को प्रोसेस करना, उस चीज को समझने की कमी है. जैसे बोलते हैं ना, द एज इज लाइक देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज शॉर्टेज ऑफ एबिलिटी टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कमी है, या वो इंफॉर्मेशन को समझने का और इजी तरीके में पेश करने की कमी है. तो इसलिए क्या होता है कि वी ऑलवेज रिक्वायर द हेल्प ऑफ ऑल द एक्सपर्ट्स. जो लोग भी एक्सपर्ट हैं उसी चीज में दिन रात निकालते हैं फॉर क्वाइट सम नंबर ऑफ years एंड थिंक ओनली अबाउट दैट. बाकी कुछ नहीं करते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं. So it becomes easy to speak to such people who have processed that information, who have spent time on that information, who have studied those information, who have used certain techniques to present those information. तो उनसे हम बात करते हैं, तो it becomes easy to understand that, and अपना जो टाइम है वो चीज प्रोसेस करने का वो बहुत कम रहता है, और गाइडेंस भी सही मिल जाता है. So that is the whole purpose of having this session. How can psychometry test become a blueprint to your career? मतलब आपका करियर जो पाथ बनाने वाले, उसमें साइकोमेट्री टेस्ट की कैसा रोल हो सकता है? How it can be more, you can say, more aligned towards your very long term goal. And जैसा हम बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा प्रोफेशन और मेरा पर्सनल लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है. मतलब कुछ तो बोलते हैं ना, नहीं अभी मुझे वीकेंड का ब्रेक लगता है, मुझे छुट्टी लगता है, बिकॉज दे फील वी आर बोर्ड, वी आर फ्रस्ट्रेटेड, और ब्रेक चाहिए, वेकेशन में जाना है. तो ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, बिकॉज वो लोग दे आर नॉट पॉसिबली एंजॉइंग दैट वर्क दे आर डूइंग, तो उनको ब्रेक लगता है. बट somebody there are also many people who have synced their work and the personal thing in such a manner that they enjoy both. तो उनके लिए काम करना एक अलग प्रोसेस नहीं, it's a part and parcel of their life. Correct? So those type of careers are you can say set or defined by people who have found the career option which was in align with their interest या पैशन. तो इसके साथ अलाइन रहता है, तो वो लोग बहुत मजे से काम करते हैं. तो कभी उनमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आती है, कभी थकावट नहीं आती है, या ऐसा बोर नहीं होते हैं वो लोग, ऐसा क्रिब नहीं करते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं करते हैं वो लोग. ठीक है. तो एनीवेज, so for understanding psychometry test, how it works, how it helps, एंड उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, और किस तरह से ये होता है, फॉर दैट पर्पस वी हैव आवर you can say one of the person who has done quite some work on psychometry test, that is Prachi we have on board. So Prachi will give us the whole idea about the entire thing in the form of a chat or a question answer format. तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप जरूर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं.
हम उस सवाल को भी आंसर करेंगे, ठीक है। एंड विल कीप दिस सेशन इंग्लिश में रखते हैं, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का मिक्स मैच करते हैं, फाइन, so it is easy for Yeah. us to converse and understand. Okay, so we'll not Yes. waste much of time. With that background, we welcome Prachi. Good morning, Prachi. Welcome Good to the morning. session. Yeah, thank you. Good morning. Yeah. So, Prachi, like before we start, can you just give us some background about कि भाई साइकोमेट्री टेस्ट का आपको इंटरेस्ट कहाँ से आया, या आपने इसके ऊपर क्या कोर्स किया है, या किस तरह से आपने इस पे काम किया है? कैन यू गिव सम स्मॉल बैकग्राउंड अबाउट योरसेल्फ एंड साइकोमेट्री टेस्ट? So I basically have done my graduation, and in our college as well, we had seen ki people don't know. Like in my batch, I had seen ki we didn't have any option. That's why we chose this particular course. I don't want to name the course because बराबर. that would be demeaning. But yeah, we chose this course, and now they are doing completely different. They did something in graduation in commerce. Now they are going for interior designing, and which didn't have any much reference to it. So Correct. that was something कि यार होना चाहिए था हमारे टाइम पे. If anyone would have in my 12th standard told कि proper guidance and everything, the scientific tools basically that they use, which gives us also a clarity ki okay there this is Correct. something like that. And then we had seen students also, so we got to know, we discovered about this psychometric test from one of the person, and then we started with the course and everything ahead with it. Correct. So basically to help and guide with students, since we day and night we deal with them, we talk with them, we are in touch with them, so that this would be a great help for their future also, because this is something which plans their next 7-10 years, and then the whole work life on the basis of the stream and the career they choose. Great. That's nice. And जैसा आपने बोला, you want to help students in taking decision in a very scientific manner. बढ़िया, that's a very important uh, sentence, because normally लोग help करने की कोशिश करते हैं, but that is more out of emotions कि नहीं नहीं मुझे help करना है, but वो बोलते हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस या अपना लिमिटेड नॉलेज के साथ करते हैं. मे बी वो लोग कॉमर्स से है तो बोलेगा कॉमर्स कर, अगर कोई साइंस वाले से मिला बोला साइंस कर, कोई ब्रिलियंट रहेगा बोला तो मेडिसिन कर, डॉक्टर कर, जबकि उसका उसके साथ कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा. बट दे देयर आर मेनी हु हेल्प, बट देयर आर मोर यू कैन से ऑन इमोशनल लाइंस एंड क्या बोला कंपैशन रादर देन प्रॉपर साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल टूल. सो अगर कंपैशन और साइंटिफिक टूल और आपका हेल्पिंग नेचर साथ में रहेगा, देन द ट्रिगर जो बोलता है ना, ट्रिगर इज वेरी ह्यूज एंड इट बेनिफिट्स अदर पर्सन आल्सो. करेक्ट, दैट्स वेरी नाइस And एंड many मैच्योर्ड of ऑन. Yeah, and क्या many बोल. of the times, what happens is they choose the safest stream. करेक्ट. The ones who are advising, they feel this is the safest stream. Risk kam hai yahan pe. Maybe that is because of their knowledge constraint that they have. They might not have about other streams, but करेक्ट. yeah. And student might not like it. They realize it late once the time has passed, and Correct, very correct. No, that's right. Since I'm also from this education field for last 27-28 years, तो बहुत बार हम यही देखते हैं कि पेरेंट्स हो या बच्चे हैं, तो वो लोग यही करियर चूज करते हैं जो सेफेस्ट है. जैसे आपने बोला सेफेस्ट है, कहाँ पर सेफ्टी ज्यादा है, कि जॉब मिल जाएगा या उनका इनकम स्टेबल रहेगा. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट दे सेलेक्ट रादर देन बेस्ड ऑन द पैशन ऑफ द स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट. वेरी करेक्ट. सो दैट वाज एनीवे माय फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई जनरली क्या बात है, लाइक आपने बोला कि हमने देखा है कि स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं अपना करियर चूज करने में. तो जनरल ट्रेंड क्या है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस कि भाई जनरली लोग, आप या आपके जैसे वो जनरेशन के लोग या जो भी आपके बाद वाले भी जो है, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन कि भाई लोग करियर किस तरह से सेलेक्ट करते हैं या स्ट्रीम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं?
if we see in schools, because that is the time, 10th standard is the time when we select the subject and वहीं से career streams and everything. So वहाँ पे ऐसा है कि टॉपर या जो मोस्ट पॉपुलर स्कूल गैंग है उन्होंने कौन सा चूज किया. नो पियर्स फ्रेंड्स या करेक्ट. ये टॉपर है इसने तो ये चूज कर लिया, बट वो टॉपर का चूज करने का तरीका कुछ अलग होगा, उसको कोई सही सब्जेक्ट बात. लाइकिंग अलग होगी. बट ये चलो ये मोस्ट पॉपुलर पर्सन है स्कूल का, इसने ये सब्जेक्ट चूज किया तो विल गो अहेड विद इट. Then बराबर. maybe, as I said, the family, whole families of chartered accountants. करेक्ट. So the child should also go for chartered accountancy. Maybe he might be interested, maybe he might not be interested, but that is the one career option that is popular in the family that they have seen. Ki everyone is a chartered accountant बराबर. or a doctor, engineer. That generally happens, and or else the pressure, the what we say, the courses which are very much famous. करेक्ट. That is a doctor and engineering is something that chartered accountancy is something that from years it's very famous. It's very safe, and it's very well known, well करेक्ट. explored बराबर. career option. So they might go ki popular career option kaun sa. And students, which we have seen some of the students Instagram reel में ये बहुत famous है. People, there are few influencers जो educational influencers and they are talking about this particular career. So maybe we should करेक्ट. explore that. बराबर है. दैट्स राइट. सो यू व्हाट आई अंडरस्टैंड इज पीयर हो गया, मतलब फ्रेंड सर्कल हो गया, पेरेंट्स हो गया, स्कूल के टॉपर्स हो गए, या फेमस जो है, इस तरह से पिक किया जाता है. वेरी करेक्ट. सो यू मीन टू से दिस इज द बेस्ट वे, यही सबसे बेस्ट तरीका है काम करने का? I would not rather say this is the wrong way, because what might have worked out for them might not work out for you. It would be their interest and their personality might suit to that particular career करेक्ट. choice. They might have the aptitude, the understanding of that career choice, but not necessarily you might also have. I'm not telling that student might not have anything. They might have, but their specialization would be any different. And I have a real life example which I would like to share with everyone. ओके There प्लीज. was a student, family full of engineers, and she herself did engineering. And then at the age of say 29, when 29 is something that we are well settled in our work life as well. करेक्ट. बराबर है. But at the age of 29, she realized that engineering is not my forte. I don't want to do engineering. I बराबर. always wanted to become a surgeon. So करेक्ट. at the age of 20, it's a big thing that at the age of 29, she wrote NEET, she got cleared, she started her medical. But it is something, if she might have knew that years back, she might be a very successful surgeon, where she might reach the position at the age of 35, she might have reached at the age of 24 and 25. बराबर. That could have saved the whole decade. Obviously, she is doing well. Her medical and everything is done. But yeah, this is 10 the years are risk gone. that we should not take, because things might have worked out well for her. बराबर. Not in all cases, because this involves a lot of other factors as well. Because करेक्ट. when you live engineering, then you have to start studying at the age of 30, and things are not that easy, which it looks. And since today we have those scientific tools, and we have all the facilities, then why should not we use it? Correct, perfect. Yeah, that's very correct, because everybody can't switch career at age of 29, you know. वो भी 29 में सोचेंगे मैं पढ़ूंगा 5-6 साल, उसके बाद मैं जॉब करूंगा या जो भी है. That may not work with everybody. Everybody doesn't have that. You can say willpower बोलो, intelligence बोलो, या घर Right. में उतना support बोलो. At that age, they may not get like she did. That's very brilliant. The similar example even I came across some time back. There was a doctor who was practicing, and the husband is also doctor, she is also doctor, and they their children are grown up, and the child is in 8th standard. So during 8th or 9th, they did this psychometry test for the child, and when they did psychometry test for the child, and they also did DMIT for the child,
Then the lady was so impressed by the counseling, and then she felt maybe like counseling is my interest. So she did a test, and then she found that counseling is my passion. So she stopped practicing and she became a counselor. Now she is a full-time counselor. So, matlab, that is where the clarity, if it comes at the very early age, then that waste of time is not there. Correct. Very correct, yeah. So, like as you were saying, there should be some scientific tool, statistical tool. So, can you throw some light? Ki tool, matlab kya hai? What exactly is a tool? Can you give some So idea of the tool? before moving to the tool, let's understand first what exactly is psychometric test. Correct. So, the word psychometric actually comes from two main words: psycho, which means mind, and metric, meaning measurement. So, Okay. in simple words, if we go, it's just measures the understanding ability or cognitive ability of a person and the personality of a person. And this is very important because then your understanding and your personality plays the major role in the career that you choose. Okay. Fine. Now, when you said measurement, ki psycho means mind hai and measurement करते हैं आप. So when you say measurement, मतलब exactly कैसे or how does that measurement take place? So there are main three aspects in which the measurement is done: Hmm. aptitude, personality, and interest. The API basically. Okay. And the questions are designed in sequence of the subsets. Every aptitude, personality, and interest have their own subsets. Okay. Uh, so aptitude is comprised of five subsets. First one is numerical. Numerical मतलब Okay. basic understanding of numbers and Number. क्या है अब Nine. maths basically कि 2 + 3 Correct. भी 5 होता है. But some have the exceptional understanding of numbers. Their mental maths Correct. is very fast. बराबर. So their numerical aptitude is very high. Correct. And so then comes the verbal aptitude. Verbal Correct. aptitude matlab your framing of sentences, Mhm. your grammar, your words, the vocabulary knowledge that So, you have. correct. And उसमें ऐसा है ना, someone might be Shashi Tharoor in verbal aptitude, or some might be average student who knows and understands English. बराबर. So ऐसे. Then comes the reasoning aptitude. So बराबर. reasoning aptitude is basically logical understanding of the situations that are happening. हर चीज का reason, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हुआ ये, तो वो उन सब की समझ कुछ लोगों में बहुत हाई होती है. नो, दे आर द बराबर. प्रॉब्लम सॉल्वर्स, क्योंकि रीजन पता होता है ना, तो प्रॉब्लम पता है तो सोल्यूशन, बेसिकली दैट. बराबर. देन spatial aptitude. Spatial aptitude is basically understanding of patterns, figures. मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो 2D में बेसिक से ड्राइंग में उनको समझ में आता है कि ये चीज 3D में कैसी लगेगी. बराबर. 3D में जो Visualization. हमारे हाथ में, हाँ, विजुअलाइज करते हैं. जैसे आर्किटेक्ट्स जो बराबर. पहले पेपर पे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर Building. वगैरह ड्रॉ करेंगे, फिर उसका ही 3D मॉडल बनाएंगे. डेवलप करेंगे. तो जिनमें स्पेशल एप्टीट्यूड बहुत हाई होता है उनका. बराबर. Then comes the mechanical aptitude. So mechanical aptitude is basically the understanding of numbers and the mechanical मशीन. concepts, machines मशीन बनाना. basically. Yeah. ग्रेट. तो ये एप्टीट्यूड का 5 पार्ट्स हो गया. Yes, ग्रेट. yes. उसी So तरह now इंटरेस्ट comes का भी है. पर्सनालिटी personality का भी. and interest. Yes, yes. So now moving ahead to personality. So personality is also divided into five subsets. First comes the learning orientation. Now learning orientation मतलब एकदम layman language में तुम कितने flexible हो या कितने open हो to learn new things. नया नया चीज सीखने में. Yes, yeah. Are you constrained? Are you someone कि नहीं, मेरे को इतना ही आता है, मेरे को इसके आगे नहीं सीखना है, जो है सीखना वो ही नहीं. बराबर है. हाँ, बराबर. सीखना ही नहीं है. या तो फिर आर यू समवन की जो हु इज ओपन टू लर्निंग कि नहीं, मेरे को इतना आता है, बराबर. बट देयर आर अपग्रेड्स कमिंग एवरी डे. करेक्ट. देन कम्स द इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन. बराबर. एक्सक्यूज मी. सो इंटरपर्सनल मतलब एकदम बेसिक
बोला जाए तो आप एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, या एम्बिवर्ट पर्सनालिटी, एम्बिवर्ट बरोबर हो ऐसा। नाउ एम्बिवर्ट इज समवन जो मिक्सचर है इंट्रोवर्ट का और एक्सट्रोवर्ट का। बरोबर आहे. एक्सक्यूज मी। जो जिसको पता है कि कब उसे सोशली मिंगल भी होना है और कब शांत बैठ के सब ये भी देखना है, बिकॉज वी हैव सीन स्टूडेंट्स विद एम्बिवर्ट बरोबर. पर्सनैलिटी नाउ। करेक्ट. देन कम्स द इमोशनल ओरिएंटेशन। तो इमोशनल ओरिएंटेशन में बेसिकली इट्स स्ट्रांग हो, काम हो, या कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है यू बिकम नर्वस, सेंसिटिव और एंशियस। Anxious. Correct. Yeah. Then attitudinal. Now attitudinal is something your attitude towards thing. अब tough competitive हो या फिर generous cooperative type के हो बरोबर ऐसा। आहे. हर चीज के And प्रति कैसा एटीट्यूड है. करेक्ट। और कॉन्शियसनेस, तो अब बरोबर. कॉन्शियसनेस मतलब क्या कि आप काम किस तरह से करते हो, आप फोकस्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, इजी गोइंग हो कि इम्पल्सिव हो बरोबर आहे. ऐसे। So consciousness tells us that about your personality. So now moving ahead to interest subsets. Interest has six subsets. So the first one would be realistic. So realistic मतलब realistic are the doers जिनको physically काम करके अच्छा लगता है. They like to do the physical work. Then बरोबर. comes the investigative person. Like आपको करेक्ट. चीजें फिजिकली करनी अच्छी नहीं लगती. दे आर बेसिकली द थिंकर्स. उनको हर चीज को एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, एंड हर इंफॉर्मेशन को जो जो कुछ भी आसपास हो रहा है उसको. बरोबर. Then comes the artistic. So artistic people, they are basically creative, as the name suggests. They are very creative, are very much into creativity and art and everything. करेक्ट. Yeah, and then comes the social. So the social people are basically helpers. They like to help everyone in the society. Uh, the social service, they have that compassion towards helping others, basically. बरोबर. And then comes the entrepreneur. So entrepreneur, we all know entrepreneurs are the leaders. They motivate, influence, and वो basically लोगों को आगे लेके चलने वाले हैं. खुद तो ग्रो बरोबर. करेंगे, but then they take people also ahead with them. And the last one is the conventional person. Like they are the basically the organizers. उनको management वाले लोग होते हैं ना कि they like to organize and manage everything. The बरोबर. multitaskers basically. ओके. ग्रेट. सो आई Yeah. थिंक एप्टीट्यूड में 5 सबसेट्स है, पर्सनालिटी में 5 सबसेट है, इंटरेस्ट में 5 सबसेट है. So Interest has totally six. 6. So totally you meant to say 16 areas will be tested, correct ना? Yes. Yes. 16 एरियाज का टेस्टिंग होगा. तो ये जो 16 एरियाज का जो टेस्टिंग होगा, तो इस सबको कैसा, मतलब इसको कैसा जोड़ के करियर ऑप्शंस डिसाइड होते हैं, मतलब ये किस तरह से जोड़ा जाता है? 16 एरिया मतलब आपके 16 एस्पेक्ट्स को कनेक्ट करके आप एक फाइनल रिपोर्ट बनाओगे ऑफ द करियर. हाउ दैट एग्जैक्टली हैपन? दैट इज अ क्यूरियोसिटी, हो ना? Yeah. So the firstly, which I want to say is the 16 aspects everyone has. The difference is किसी के पास कुछ कोई एस्पेक्ट ज्यादा होता है, कोई एस्पेक्ट कम होता है. And now how we a very famous statistical tool which we use for testing these areas is Cronbach's alpha. So it just correlates all the above information and generates a 16 to 17 page detailed report about a student. So in this report, everything, the aptitude individually, numerical, वो सब भी individually in detail would be given, and a whole mixture, a comparison of all these three things would also be there. So like, can you share some example कि भाई ये, और can you just show your report, like कैसा रहता है ये करियर का रिपोर्ट, दिखता कैसे? Can you just share? Do you have a Yeah. physical copy with you?
Yeah, फिजिकल just a कॉपी minute. आप दिखा सकते हैं तो हमको भी एक आइडिया आ जाएगा भाई वो समरी चार्ट कैसा दिखता है. हाँ. Yeah. So example, for example, we had a student who had a combination of good verbal aptitude, good and investigative person. Like मुझे हर चीज जाननी है. आई वॉन्ट टू हर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एनालाइज करके उसके बाद ही उस पर कुछ कमेंट करने एंड दे आर वेरी सोशल पीपल एज वेल. So these kind of student they were recommended of mass media and journalism. This is the basic thing that मोटा मोटा हिसाब. yes mota example and so see this is how you report the report you get. So first one is aptitude, second one is interest, and third one is personality. हाँ सर. Can you show that summary chart of the career Yeah. का summary chart कैसा दिखता है? ओके. नहीं ऑल द So करियर्स का एक था ना रिपोर्टिंग वो वैसा yes, कुछ है आपके पास कि yes, करियर yes. टॉप 10 करियर्स आपका क्या है ऐसा कुछ आता है क्या? हाँ ये टॉप 10 करियर्स आता है ऐसा. Yeah, top 10 careers and the rest two Cluster. images, the rest two pages which I showed are basically the top four careers and it has a comparison of your API basically. Okay, great. So you are sharing some example like somebody who's a very social type, social Good type verbal है aptitude जिनका वर्बल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा and है, a investigative person. इन्वेस्टिगेटिव है. तो इस तरह का लोगों को आपने बोला मास मीडिया कम्युनिकेशन Mass मतलब media and जर्नलिज्म. journalism. Very Yeah, they correct. Because can. you should be good at framing sentences. You should be, you can say, tuned to help people. The motivation is to help people. So journalism comes into And the you should flow. be a extrovert personality as well because in Extrovert a day you have personality. to talk to hundreds of people. So, Correct. So yeah, very good. That's a very nice connection which is created. Good. Any more? yeah. I said a few Yeah, more examples. Quite so interesting. So so we had a student whose special aptitude, that is the creativity part, understanding of patterns and figures, was very high, above average, exceptionally well. And then as a person, good, matlab strong, calm, and emotionally very strong, calm, patient student, and attitude towards things was a very cooperative student. ऐसा नहीं कि I'll be tough, I'll just do myself and ऐसा. well. So, and very artistic as well. So, Mhm. for them, the career choice was architecture, designing, basically. Okay. No, because good understanding of patterns and very generous, so emotionally they're strong and calm person. So they know now architectures, interior designers. If you see, they need to understand the needs as well for the clients, and that's how they create the space. Oh, great. Very nice. Yeah. That's very nice. And now then the question is कि by any age limit क्या who can do this? Any age limit for doing this psychometry test? ऐसा कुछ है cut off वगैरह? So yeah, anyone in grade 8 standard till the age of 21 years can do this psychometric test with us. Okay, so 8 standard. Anybody who's in the standard 8 can do the Yeah, psychometry. That's a starting point. yeah, मतलब that's a that's start. where they have to decide. कि some I think some boards में they have to School, decide which subjects they can choose like maths or they want to do science or commerce. I yeah. think ICSE board So में होता है. ICSE board, IB board, they Right. have to choose this right from 8th standard. Correct. From ninth standard, all those subjects, the commercial mathematics and everything starts for them. So they have to Great. make a choice right from 8th standard. And that's good Great. at a point if we see, because they are very much clear of that next 5 to 7 years what they want to study, which stream they Correct. want to go. The So, but if earlier they they, do it yeah, better. correct. So if they missed at 8th standard, maybe they will do it at 9th or 10th. Some, Yeah. कुछ Other कुछ, boards have to हाँ. choose their streams after 10th Yeah, many standard. start So, thinking at standard 10 maybe. yes, 10th में आने yes. के बाद सोचते हैं अभी एक साल में मुझे डिसाइड करना है क्या करना है.
So it is recommended कि अब 10th standard start हो तभी ही करो तो कर दो। because then once your subjects are chosen then best colleges. So if the best colleges have high cutoffs, we all know. So the 10th standard can be planned in such a way that they have their goal no कि करेक्ट 95% है तो it's recommended कि 10th standard के start में ही they do this test. So they also have a clarity throughout the 10th standard. You have to करेक्ट go to this stream. I want this subject. I want this college, and I have to get this much scores. करेक्ट। तो मतलब जितना जल्दी आपको क्लैरिटी आ गया कि आपको कहाँ जाना है, तो उसके हिसाब से आप प्लान करो कि अच्छा ये कॉलेज में जाना है, उसका कट ऑफ कितना है, कितना परसेंट है। सो ऑल दोस इज क्लियर, सो यू अकॉर्डिंगली आर मोटिवेटेड टू स्टडी एंड डू फर्दर। एम आई राइट इन दैट? Yes, yes. ग्रेट। अच्छा, अभी ये जो साइकोमेट्री टेस्ट है, इसका कुछ ऐसा क्या बोले, आप बोलते हैं 8 में कर सकता है, 9th में कर सकता है, 10th में कर सकता है, या टिल एज ऑफ 21। तो इसके लिए कुछ ऐसा पढ़ना पड़ता है कि यू हैव टू स्टडी, ऐसा कुछ पढ़ के आना पड़ता है टेस्ट लिखने के लिए, कि क्या No. स्टेप्स है, व्हाट एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लेना पड़ता है, मतलब टू इफ सपोज आई वांट टू गेट इट डन फॉर माय ब्रदर और माय सिस्टर और माय सन और डॉटर, तो क्या स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड, ऐसे जरा बताएंगे तो अच्छा होगा। Yeah. So the most important thing is you don't have to study anything. The test word comes and students are like, "अरे पढ़ना पड़ेगा." नहीं, you don't want to. This basically tests what qualities you have, what aspects are well developed in you. So बिना पढ़े you have to write this test. And करेक्ट now the steps that are first, you just have to register for the psychometric test basically. Then, once registered, you will get an appointment with the counselor for the pre test counseling. करेक्ट So, once the pre test counseling is done, then you have to give the 90-minute online test. And once that's done, then you will get again an appointment with the counselor. 60-minute one to one counseling will be happening, करेक्ट which will have a detailed discussion of your psychometric test report. करेक्ट। And आई अंडरस्टैंड कि पहला आप डिसाइड कर लो साइकोमेट्री टेस्ट देना है, तो आप रजिस्टर कर लो साइकोमेट्री टेस्ट के लिए, तो आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगा जहाँ पर टेस्ट के पहले का काउंसलिंग होगा। स्टेप 3 में आप टेस्ट दे दो, आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, रिपोर्ट लेके काउंसलर के साथ 1-to-1 सेशन होगा, yes, एक्सप्लेनिंग द होल रिपोर्ट एंड द करियर ऑप्शंस। yes, राइट। correct. अच्छा, Yes, लेकिन yes. बाद में भी अगर आपको डाउट आ गया 6 महीने के बाद, ऐसा थोड़ा टाइम के बाद आपको डाउट आया, तो क्या करने का, एनी They फैसिलिटी can अवेलेबल? get in touch with the counselor anytime. सो वी हैव टू गेट बैक टू यू सेइंग कि आपको अभी डाउट है, तो Yeah. वी विल सॉल्व इट। ओके, ग्रेट, दैट्स वेरी नाइस। एंड चलो टेस्ट आ गया, सब पता चल गया, और कुछ एक साइकोमेट्री टेस्ट करेंगे हम आपसे, तो कुछ और कुछ एडवांटेजेस है क्या, एनी अदर एडिशनल बेनिफिट्स कुछ है? So the biggest benefit, the advantage that they have, they get the access to the dashboard. Now, what is dashboard? Dashboard is something जहाँ से उन्होंने अपना ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ था, तो टेस्ट ओके। हो जाता है, उसके बाद ना उनके पास एक्सेस होता है करियर्स के बारे में इन डेप्थ के लिए। अभी चलो, आई गॉट मास मीडिया एंड जर्नलिज्म, बट उसमें कौन सा कॉलेज जाऊं? अब मुझे कॉलेज जाना है XYZ कॉलेज, बट उसका फीस इज इन लैक्स ऑफ रुपीज। आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो उसके लिए कोई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है क्या? तो द डैशबोर्ड हैज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, एंड इवन स्कॉलरशिप के बारे में पता चल गया, चलो यू हैव टू गो, तो स्कॉलरशिप का लिंक, उसका डेट्स, उसके अलर्ट्स वगैरह जो नोटिफिकेशंस है, वो स्टूडेंट्स को पूरे 1 ईयर के लिए फ्री एक्सेस मिलेगा once ग्रेट। they from the day they give the psychometric test. So they'll have the detailed information, and colleges all over the world, not just in Mumbai or Maharashtra, Gujarat or India as a whole, colleges all over the world, they can see, they can get the fee structure and everything, how to get the eligibility. Some colleges have to have that IELTS and everything. ग्रेट। So the eligibility, the fees and everything, the students will get access to. Superb, superb. That's very nice. The nice facility for 1 year's time. That's a big time. Good. Yeah. And coming to the other important part, like the क्या फीस है, क्या कुछ उसमें बेनिफिट्स है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए।
So as of now, let's the students who all are in the live just process this information and decide whether they want to, go for the psychometric test. And if they are interested, they can just DM us, anyone from Mensa Commerce Classes or our Know Thyself page, and we'll get in touch with them, and all the details would be shared then. So whatever offer is there at that time, you'll share with them. Yeah, yeah. Very good. Very good. Thanks. And any other questions like the audience has, you can ask. We'll answer you. And that was very informative, Prachi. Thank you very much for Thank you. taking out time and giving us all these details in very, very, you can say, common man's language में आपने समझाया. तो that brought lot of clarity and लोगों में जो एक ऐसा रहता है कि नहीं साइकोमेट्री टेस्ट ऐसा तो मेरे को सब मालूम ही है अपने बारे में. आई डोंट थिंक एनीबडी इवन थिंग्स एट अ माइक्रो लेवल की 16 एस्पेक्ट्स कवर होते हैं इसमें, जैसा न्यूमेरिकल है, वर्बल है, मैकेनिकल है, पर्सनालिटी बेस्ड है. सो 16 थिंग्स विच यू सेड, मे बी हमको अभी 16 चीज हम बोलेंगे तो भी शायद सब 16 पॉइंटर्स याद भी नहीं रहेगा. So that is tested. That's a very in-depth analysis. So I think everybody should get it done. And जितना मैंने समझा सुना तो मेरा तो इतना ही कहने का रहेगा कि instead of experimenting with your career, better to do it. So there's no experimentation. You experiment with something else, not your careers and stream and waste time. बराबर? So सीधा सा बढ़िया हिसाब है कि भाई आप 4 साल वेस्ट करोगे, अगर 1 साल का भी 4-5 लाख कमाते हो तो 4 साल में 20 लाख रुपया हो गया. तो उससे अच्छा तो मे बी द टेस्ट कॉस्ट few thousands, so better to write it down. बराबर? No other question is up on the line, so we'll close the session. Yeah, I would like to add one thing that in today's world we have almost more than 600 career options available. Oh, 600. So, That's right. yeah, so why to go for few 5-10 which are popular? The Correct. others which people have not heard but are some in demand. That's why they are a career, well, legit career today. So why to, go for this thing? I guess someone has commented. Yeah, somebody is asking, my brother is in 8th standard, grade 8. So he has joined the session. So nice. And can he also do the test right now? Yes, yes. Yes, he can do the test. If he is interested, just ask him to, DM us, and we'll get in touch with him. And whatever queries he have, we'll just clear it out. Yeah. That is direct message. DM मतलब वो सब हाँ. जनरेशन ABCD का कोड है सब. तो आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए इनको, तो ये आपके संपर्क में आ जाएंगे और आपको जरूर हेल्प करेंगे उसमें. सो वेरी नाइस. एंड जैसे आपने बोला more than 600 career options. I don't think any of us are aware of 600 career options because normally हमारे फिंगर में ऐसा 10 या 15 या 20 करियर होंगे. जितना मैंने इनसे भी बात किया ऑफ दैट, सो दे हैव वेरी वेरी डिफरेंट ऑफ बीट करियर्स बात करते हैं लोग. वेब डिजाइनर है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है, FRM है, ऐसा कुछ कुछ अलग अलग सा. बिग डेटा बोलते हैं, डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं. ये तो कुछ कुछ मैंने इनसे बात करते करते सुना है और सीखा है. सो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर. आई थिंक इट विल बी रियली ग्रेट टू spend on this and make your dream come true. Very few people can make that dream come true. Okay, so thank you very much. So we will end the session with big thanks to Prachi, her team, and all the people who have spent time on this. Thank you very much. Thank you, Bye, sir. Prachi. Bye, Yeah, bye, bye. Manisha. Bye, Know Thyself. Thank you very much.